when I was going through the budget speech, I was actually taken in by the key words that you used throughout the speech. Digital, green, climate, Atmanirbhar, made in India, capital expenditure, ease of doing business, tax revenues, GST collection, futuristic economy driven by technology, clean fuel, smart cities. But there were certain words which were missing. What were those? Unemployment, poverty, food security, informal sector, migrants, daily wages, health for all, welfare, social protection, women, youth. Now I ask myself, who is this budget for? Is it for that 1 or 2% of the people at the top who buy all the airports and all the ports? Or is it for, and what's the responsibility of any government and the finance minister? The responsibility is to take care of the people at the bottom of the pyramid. Unemployment के बारे में आपको कुछ बताता हूं. पहली बात तो ये है कि आप अगर youth unemployment की बात करें, so World Bank data 2019 says that India had a level of unemployment of 23% amongst the youth. 23%. China unemployment rate in neighboring countries 2020, data by the Center for Economic Data and Analysis based on ILO database, China had an unemployment of 5%, Bangladesh 5.3%, Pakistan 4.65%, Sri Lanka 4.84%, and India 7.11%. This is where we are. This is your shining India, whatever. Now, you have said that I have increased the capital expenditure by 2 lakh crore. That's what you say, to 7.5 lakh crores. So, जो 2 lakh crore है, that is for the purposes of building infrastructure. But आपने कभी देखा कि जो unemployment है वो कहाँ है? आज के दिन unemployment कहाँ है? मैं आपको बताता हूँ, शायद आप भूल गए होंगे. Industry wise job losses आपको बताता हूँ. Manufacturing 9.8 million loss of jobs. Hotel and tourism 5 million. Education 4 million. Overall services sector 1.8 million. Fall in central government employment 3.32 million. In 2012-13, it's now 3.31 million. Employment in railways 1.27 million. ये तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर हैं. तो अगर आप सड़कें बनाओगे तो वो इन सेक्टर्स का क्या होगा? होटल और टूरिज्म का क्या होगा? एमएसएमई सेक्टर का क्या होगा? एजुकेशन का क्या होगा? ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर का क्या होगा? तो when you have to deal with unemployment, you have to do it sector wise. You have to give them relief sector wise. जो आपके सड़कों में जो लोग लेबर आती है वो मोस्टली अनस्किल्ड रहती है. अच्छी बात है कि आपने 2 लाख करोड़ दिया है. उसमें से 1 लाख करोड़ तो आपने लोन दिया है स्टेट्स को, केवल लोन, वो भी 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन. इसका मतलब क्या होगा कि वो पहले तो आप तय करेंगे कि स्टेट को जाएगा, वो ये भी मालूम है कि किन किन स्टेटों को मिलेगा. फिर कई स्टेट चाहेंगे ही नहीं कि आपसे लोन ले, क्योंकि वो टाइड अप रहेगा, क्योंकि अगर वो कोई भी प्रोजेक्ट डालेंगे तो आपकी अनुमति चाहिए. अभी हम वेल्थ की बात करते हैं, बिकॉज आई बिलीव दैट दिस पर्टिकुलर बजट हैज नो विजन, नो रियल लॉन्ग टर्म प्लान. एंड लेट मी एक्सप्लेन समथिंग टू यू एंड थ्रू यू, होपफुली द पीपल ऑफ इंडिया आर लिसनिंग. Anywhere in the world, wealth is created in universities. Wealth is never created by industry. Industry uses the ideas
and the innovations then come through young people in the universities and then turn them into goods and services. So if you give benefits to industry, it's not going to create wealth. It is going to create wealth for those individuals, but the real wealth for of the nation will be created in the university system. And let me tell you that, and you'd be really shocked. And the other real wealth created will be on the basis of research and development. What kind of investment do you make in research and development? I'll give you some very interesting figures. That's why countries like America are wealthy, and that's why countries like India are where we are. The R&D percentage of GDP, and I'll not go into that, the US spends, mark the figure, $606 billion every year on R&D. What is our expenditure? And this is on PPP terms. Our expenditure is 47 billion. How is this country going to progress? China spends $514 billion on R&D. Countries like Japan spend 172, and they've got much smaller populations, $172 billion. Germany, $131 billion. France, $63 billion. Now, unless you put money in R&D, how will you create wealth? Unless you give your students the freedom, not the kind of freedom that we have seen in JNU, but the freedom to think, to converse, to have the freedom to decide on what to do, to bring about new ideas. If you go to any university in the United States, most of the universities are funded by the government. And in fact, there are businesses who have built campuses in the university system through their investment, aided by government. Now, if you don't give freedom in education, if you don't do investments in research, you're not going to create wealth in this country. And you've seen it in your 2019 budget. Look at the kind of benefits you gave to industry. Reducing the tax to 25%, then to 15%. The total tax now for new industry is 17% if you set up a new industry. No, they are not going to create wealth for the country. They may create some jobs. So I think that this nation should realize that unless we invest in the university system, for the ideas, for the IP to be created. What happens in the university system? The IP is created, and then business comes and does prototypes, and after prototypes, they actually see whether it's a viable commercial proposition. उसके बाद फिर वो बनते हैं, इंडस्ट्री में जाता है और वस्तुएं बनती हैं और सर्विसेज होती हैं. अगर उसमें आप ध्यान ही नहीं दोगे तो आप कौन से वेल्थ की बात कर रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ी भारी समस्या है. और फिर दूसरी बात कि हिंदुस्तान को मैं समझता हूं जैसे हमारे घरों में परिवार है, हिंदुस्तान भी एक परिवार है. और जो माँ होती है वो क्या सोचती है? हमेशा सबसे जो कमजोर बच्चा होता है ना, हमेशा उसके बारे में सोचती है. और अगर कोई कमी रह गई हो, क्योंकि जो अपने आप में ठीक ठाक है, आत्मनिर्भर है बच्चा, उसको तो आप छोड़ देते हैं कि आप आत्मनिर्भर रहो. हम उन लोगों की मदद करेंगे जो आत्मनिर्भर नहीं हैं. इस बजट में आपने देखा कोई मदद दी उनको आपने? ये बड़े दुख की बात है. और आप बात कर रहे हो अमृतकाल. अमृतकाल, मैं तो 2014 से अब तक राहु काल देख रहा हूं. कौन से अमृतकाल की बात कर रहे हो आप? बस अब देखिए ना, ये कौन सा आप अमृतकाल की बात कर रहे हो? ये तो राहु, देखिए ना. और फिर असलियत क्या है? आप फिर यहां पे मैंने कल प्रधानमंत्री को, मैं बड़ा अचंभा रहा कि उन्होंने टुकड़े टुकड़े लोगों की बात की. टुकड़े टुकड़े गैंग. अरे भैया मुझे ये बताओ, जो सभ्यता के टुकड़े टुकड़े करता है, जो इतिहास के टुकड़े टुकड़े करता है, जो संविधान के टुकड़े टुकड़े करता है,
जो भाईचारा के टुकड़े टुकड़े करता है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर है। कि 2014 में पेट्रोल का जो कीमत था पर लीटर वो 71 रुपया था और जनवरी 2022 में वो 95 रुपए है। सेंट्रल एक्साइज जो हमने लागू की 2014 में वो 9.20 पर लीटर, 9.20 रुपए पर लीटर, और आपने 27 रुपए कर दिया उस पे एक्साइज। कितनी बढ़ोतरी हुई? 203%, 203%। डीजल पे 55 रुपए उसका दाम था पर लीटर, उस पे एक्साइज थी 3.46। आज दाम है 86 रुपए, उस पे एक्साइज है 21 रुपए, और उसकी जो बढ़ोतरी है वो 530% है। 530% बढ़ोतरी। और मैं सोच रहा था, क्योंकि आजकल यहां औरंगजेब की बात बड़ी होती है, तो मैं इतिहास को देख रहा था और इतिहास में मुझे यह पता चला कि एक शख्स जो हमेशा, हाँ जजिया की बात हो रही है, जो अहमद शाह था 1414 में सबसे पहले जजिया उसने लागू किया। उसके बाद अकबर आया, एम्परर अकबर आया, उसने उसको खत्म कर दिया। फिर औरंगजेब आ गया, उसने दोबारा 1679 में लागू कर दिया। और उसने ये कहा कि जो वंचित लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उस पर लागू नहीं होगा, जो गरीब लोग हैं उस पर लागू नहीं होगा, जो हमारी रक्षा करते हैं आर्मी के लोग उस पर लागू नहीं होगा। ऐसा औरंगजेब ने कहा। और आप बात करते हो औरंगजेब की, ये तो औरंगजेब से भी बदतर बात है कि आपने सब पे लागू कर दिया, वो भी 530% और 203%। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस दिशा में जा रहे हो? आपको इतना मालूम नहीं कि जो हमारा गरीब आदमी है और जो मिडिल क्लास भी है, वो जो स्कूटर पे जाता है, जब उसको 95 रुपए 100 रुपए देना पड़ता है, उसको क्या तकलीफ होती होगी? आज मैं सुबह आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल बाय रंगनाथन जी, हु हैज बीन द एक्स गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड ही सेड टुडे दैट लुक, what is lacking is gross demand shortage. Unless you put money in the hands of people and they spend, the economy will not move forward. The purchasing power. Their purchasing power has to be increased. How do you increase their purchasing power? By reducing Manrega. By not giving them any benefits. Those sectors which have been destroyed by the economy because of the pandemic, you're not at fault at that. You're not at fault at that. इसीलिए आपके प्रधानमंत्री जी को ये जो अमृत काल है उसकी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना वो रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना आपके रहनुमा रहेंगे, और ना नफरत के बयान रहेंगे। नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं, बेखौफ, बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को, HWD न्यूज़ पर।